Assalamualaikum students. Now the next lecture, यानी जो last हमने in depth किया था, those were the characteristics of solid, liquid and gaseous state. Now जो हमने theory पढ़ी थी, that was kinetic molecular theory of a matter, which shows that matter is composed of tiny particles called molecules, and these molecules are in continuous random motion, जिसकी वजह से they possess what? A kinetic energy. Evidence, proof कि यार ये molecules जो हैं continuous motion के अंदर है, हमें कैसे पता चलता है? इसका जो proof है बहुत सारी practical examples से हमको दिखता है, but उसको experimentally Brown एक physicist था, his name was Robert Brown, उसने अपना एक experiment करके motion explain किया, which he named as Brownian motion, जिससे पता चलता है कि yes, according to the theory, the molecules and they are in continuous motion, वो continuous motion में, जैसे अगर एक example में smoke particles, smoke निकल रही है, for example हमने कोई एक match stick को blow किया, उसमें से smoke निकल रही है, cigarette में से smoke निकल रही है, though smoking is injurious, but smoke निकल रही है, तो smoke अगर आप देखोगे, वो smoke के particles haphazard move कर रहे हैं. Why they are moving haphazard? Why they are not moving in a straight line? Because जो surrounding in the medium that is air, air के molecules as compared to smoke particles बहुत छोटे हैं. ये तमाम molecules जो air के हैं वो smoke particles को आके सारी साइड से collide करते हैं. तो जब collide करते हैं तो वो molecules अपना path change करते रहते हैं और वो straight जाने के बजाय randomly move करने लगते हैं. अगर ये medium के particles move नहीं कर रहे होते तो शायद वो ऐसा motion execute नहीं करता. तो कहते हैं जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं सराउंडिंग के अंदर मीडियम के, फॉर एग्जांपल इट्स एयर, तो एयर के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं उन स्मोक पार्टिकल्स से और उन कोलिजन्स की वजह से वो स्मोक पार्टिकल्स अपना पाथ चेंज करते रहते हैं. तो रैंडम मोशन, रैपिड एंड कंटिन्यूअस, जो कि आपको दिखता है हैप्पैज़ार्ड सा zigzag, दिस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन. और ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब कोई कोलिजन्स हो सराउंडिंग से मॉलिक्यूल्स की. फॉर एग्जांपल पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं, वो पॉलन ग्रेन पानी में गिर जाते हैं. तो पानी भी एक मीडियम स्टेट ऑफ अ मैटर, लिक्विड, उसमें भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं. वो पॉलन ग्रेन हैप्पैज़ार्डली आपको इधर-उधर मूव करता हुआ दिखेगा व्हेन यू लुक थ्रू अ माइक्रोस्कोप. व्हाई वो पॉलन ग्रेन इधर-उधर हैप्पैज़ार्डली मूव कर रहा है? अगेन जो लिक्विड के सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटीन्यूअसली कोलाइड कर रहे हैं, बॉम्बार्डमेंट हो रही है उनकी किसके ऊपर? दोस पॉलन ग्रेन्स, एंड दे आर randomly changing their paths, continuously they are changing their paths. So this zigzag continuous and rapid motion surrounding के molecules की collisions की वजह से, this is called a Brownian motion. और ये जो haphazard path है, ये evidence है कि जो medium के particles हैं ये continuous random motion execute कर रहे हैं और यही kinetic theory कहती है. So इसको हम discuss करते हैं under the heading evidence of molecular motion. So evidence of molecular motion अगर आपसे पूछे, so हमें जिस motion से मिलता है, that motion is called what? Brownian motion. Who gave the concept? The name of the scientist was Robert Brown. And according to the Brownian motion, कोई भी particles due to the bombardment of the particles of the medium वो haphazard, zigzag, random और continuously move करें. For example, एक particle अगर इसको मैं show करूं, ये इस तरीके से move कर रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर, कभी इधर, like this. ये particle randomly move कर रहा है. ऐसे जो random part है इस molecule का, the collision of the molecules of the surrounding or the medium is called what? A Brownian motion. तो अगर हम Brownian motion को define करें, comprehensive definition बहुत सी जगहों पे नहीं है, मजा नहीं आता. तो बहुत सारे words को combine करके जो मैं definition आपसे share करूँगा, definitely that is going to help you out. अच्छा, ये जो आपके पास haphazard path है, ये किसी से टकराने की वजह से हो रहा है. अगर वो कोलाइड नहीं करेंगे वो स्ट्रेट चलता रहेगा पार्टिकल, बट कोलिजन जो सराउंडिंग से, दैट्स व्हाई वो अपने पाथ को
कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है। तो इसकी अगर सिंपल डेफिनेशन लिखें तो क्या लिख सकते हैं? A rapid continuous and random motion of particles due to the bombardment of molecules of the medium. This is what Brownian motion is. So how can you define a Brownian motion? This is a comprehensive definition for defining a Brownian motion. A rapid, quick, continuous, and random, haphazard, zigzag motion of particles due to the bombardment of molecules of the medium is called what? A Brownian motion. The Brownian motion is actually the evidence of what? That these molecules are moving continuously, executing a random motion, hence it possesses what? A kinetic energy. So this is what Brownian motion is. Next, any molecules को अगर हम gases के हिसाब से discuss करें, so the relation between the pressure and volume of gaseous molecules. So gaseous molecules को अगर हम discuss करें तो the behavior of gases with respect to pressure and volume is discussed under the heading Boyle's law. थोड़ा सा इसको समराइज करते हैं किस तरीके से हम वर्कआउट करेंगे. If I talk about कि यार gaseous state of matter, अभी मैं solid और liquid की बात नहीं कर रहा. I am talking about a gaseous state of matter. So मैं कहता हूँ what are the characteristic properties of the gases जिससे तुम gases के behavior को study कर सकते हो. Gases की वो कौन सी properties हैं जो तुम्हें gases के behavior को study करने में help करेंगी. तो हम कहते हैं for a given mass of a gas तीन properties enumerated हैं. P, V and T, pressure, volume and temperature. For a given mass of a gas, if you want to study the behavior of a gas, तो जो properties आपको behavior of gas study करने में help out करेंगी वो तीन हैं. Pressure, volume and temperature. इन तीन properties के दरमियान जो relation है, relation is between two, हाँ, और relation की बात करते हैं तो is whether either directly proportional or inversely proportional. इन तीन प्रॉपर्टीज की जब हम रिलेशंस बनाते हैं तो दो के दरमियान बनती हैं, बट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं PVT. हम रिलेशन बनाएंगे बिटवीन टू, तो व्हाट अबाउट द थर्ड वन? द थर्ड प्रॉपर्टी इज टू बी केप्ट कांस्टेंट. और यही चीज बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन की तो उनके मुख्तलिफ लॉज फॉर्मूले हुए. अगर मैं इसको सिंपल समझाऊं पर आपको स्टेटमेंट भी देखिएगा फिंगरटिप्स पे होगा, फिर हम उसको लिखते भी हैं और आपको सही से वर्कआउट भी हो जाएगा हमारा जो सिलेबस का पार्ट. फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, for a given mass of a gas. ये मैं सिर्फ gaseous state की बात कर रहा हूँ, okay? It has nothing to do with solids and liquids. For a given mass of a gas, तीन characteristic properties जो gas के behavior को study करने में help करती हैं: pressure, volume and temperature. मुख्तलिफ scientists ने इन properties को आपस में relate किया. Relate करने का मतलब है relation form किया. और when we talk about relation, it's directly proportional or inversely. The relation is between two, and what about the third one? It is to be kept constant. सबसे पहले 1660 में Boyle's ने जो relation work out की, that was between pressure and volume, and temperature was kept constant. The relation between pressure and volume was examined by a physicist. His name was Boyle. That's why it's called Boyle's law. Now what the relation between pressure and volume keeping temperature constant is, अभी देखते हैं. Any syllabus के बाद बता रहा हूँ. And the relation between volume and temperature keeping pressure constant was explained by another physicist, and his name was Charles. And that law is called what? Charles' law. For the time being, we have nothing to do with the Charles law. हमारे syllabus में Boyle's law. What relation between pressure and volume actually Boyle's explains? The relation between pressure and volume according to Boyle's is inverse.
Yani volume and pressure are inversely proportional. When you increase pressure on the gas molecules, their volume decreases. Because molecules दूर होते हैं gas के, सबको पता है, volume है, space है. तो जब मैं pressure increase करूँगा तो molecules करीब आ जाते हैं. और जब molecules करीब आते हैं, तो pressure increase करने से volume decrease होती है. So when pressure increases, volume decreases. This is called inverse relation. Keeping which parameter constant? That is temperature. So when we write a statement for Boyle's law, तो mathematically देखें तो क्या समझ आता है? So according to Boyle's law, for a given mass of a gas, volume of a gas is inversely proportional to pressure. This is sign of proportionality, but जब inverse relation लिखते हैं तो reciprocal form में लिखते हैं. So volume is inversely proportional to pressure while temperature T is kept constant. Keeping temperature constant, volume और pressure का relation क्या होता है? Inversely proportional. This is relation. हमने बनानी है equation so that मैं इसको formula में work out करूँ. Relation को equation में change करने का rule है whenever sign of proportionality is removed, you get equal to with one constant. यहाँ पे भी when sign of proportionality is removed, you get equal to with one constant. मैंने इसको यहाँ constant spell कर दिया, books में इसको k लिखा होगा, k upon p. Pressure, volume, these are the variables. Variable means pressure, volume change हो सकता है. But k is what? Constant. तो variables को एक तरफ कर दो, constants को एक तरफ कर दो, तो equation क्या बन गई? PV is equal to constant or PV is equal to K. ये जो आपके पास equation आती है, this is called mathematical representation of Boyle's law. It's mathematical representation of Boyle's law. Why this is representation? Because this represents Boyle's law. We cannot use this formula. Why we cannot use this formula? Because of this constant. क्या मतलब? Because we don't have the value for that constant. Why we don't have value for this constant? हम higher grades में पढ़ेंगे. But for the time being, this constant has no significance. इसकी importance नहीं है. क्यों नहीं है? Because this constant is for a given mass. और जब भी for a given mass हम बात करते हैं तो constant significant नहीं है. क्यों नहीं है? Higher level की बात है, higher level में देखेंगे. बस for the time being आप सिर्फ इतना याद रखें. This is the mathematical representation. Why representation? It's not a working formula. Why not a working formula? Pressure, volume अगर आपको पता भी हो, you don't know the value for this constant. That means this constant has no significance. Why the constant has no significance? Simple answer for the time being. Because this constant is for a given mass. और for a given mass, constant significant नहीं है. हर sample के लिए इसकी value different होगी. तो हम कहेंगे अभी तो फिलहाल हमें constant का पता ही नहीं है, तो भाई हम इस formula का क्या करेंगे? How can we work with this formula? ये मैं आपको next step में बताऊंगा. But before that, what is the statement of Boyle's law? अगर इस पूरे concept से Boyle's law को हम discuss करें, nothing to do with Charles at the moment. तो Boyle's law का statement क्या समझ आता है आपको? Simply start from for a given mass. Statement आपके सामने. For a given mass of a gas, volume is inversely proportional to pressure while temperature is kept constant. So सबसे important चीज to explain or to state Boyle's law is for a given mass. और इस given mass की वजह से this constant has no significance. क्यों? We have nothing to do with that right now. बाद में देखेंगे higher levels के ऊपर. But for the time being, statement is for a given mass of a gas, volume is inversely proportional to pressure while temperature, short form लिख रहा हूं, is kept constant. Isn't it simple to learn this statement? Yes. For a given mass of a gas, volume is inversely proportional to the pressure while temperature is kept constant. What is the mathematical representation of Boyle's law? PV is equal to constant.
What the value for this constant is? Constant has no significance because it's for a given mass of a gas. फिर क्या करें भाई? हमें तो इस फॉर्मूले को वर्कआउट करना है. Right now हम इस कांस्टेंट को यहाँ से फिलहाल जब तक वैल्यू नहीं है हम इस कांस्टेंट को वर्केबल बनाते हैं. कैसे वर्केबल बनाए? एक ही हमारे पास सोल्यूशन है कि इस कांस्टेंट को यहाँ से हटा दो. तो वैल्यू ही नहीं है तो हाउ कैन वी वर्क इट आउट? हम उसको एक और तरीके से वर्क करते हैं. हम इसी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को वर्क करेंगे फॉर इनिशियल स्टेट and for final state of a gas. Initial और final state क्या है? प्रेशर बढ़ने से पहले प्रेशर कितना था, वॉल्यूम कितना था, प्रेशर बढ़ने के बाद प्रेशर कितना हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया. तो हम इस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को जिसमें फिलहाल कांस्टेंट की सिग्निफिकेंस नहीं है फॉर इनिशियल स्टेट लिखो. इनिशियल स्टेट मींस बिफोर व्हेन प्रेशर वाज नॉट रेज्ड. हम लिख सकते हैं P1 V1 is equal to constant. यानी मैंने इस रिप्रेजेंटेशन को फॉर इनिशियल स्टेट P1 V1 में लिखा. What is P1? Initial pressure. V1 initial volume. When pressure increase, of course volume will change. तो अब जो आपके पास यही एक्सप्रेशन लिखा जाएगा वैसा आएगा. P2 V2 is equal to constant. So क्या मेरे पास वो रिप्रेजेंटेशन जिसमें कांस्टेंट सिग्निफिकेंट नहीं था, फॉर्मूला वर्केबल नहीं था, फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट स्टडी करके मैंने इसको P1 V1 और P2 V2 में कन्वर्ट कर लिया. यस. नाउ दीस टू इक्वेशंस दोनों की राइट साइड देखो क्या है? कॉमन. इट्स कांस्टेंट. एंड व्हेन दोनों साइड्स कॉमन है तो वी कैन कंपेयर देम. सो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दूं, कंपेयरिंग नाउ ये रिलेशंस नहीं है, ये बन गई इक्वेशंस. कंपेयरिंग above equations. When we compare them, constant to constant cancel. So what we are left with? P1 V1 is equal to P2 V2. This is what the mathematical expression for Boyle's law is. Now we can use this expression as a working formula for Boyle's law. और इसी से लेकर आपके पास number of questions past paper में 3D section के अंदर मौजूद है. And this is called what? That was mathematical representation. So we may call it, it's a mathematical expression. So this is an expression which you can use to solve number of problems linked with the Boyle's law. When we talk about Boyle's law, it's a law which is linked with gaseous states only. It has nothing to do with solids and liquids. And what it shows the behavior of gases when pressure and volume are related to one another. So what is the relation between pressure and volume? They are inversely proportional. This is the representation and this is its expression. So this formula should be on your fingertips. It's P1 V1 is equal to P2 V2. Now we discuss one of. Okay, let's take up with one problem. But before that, अभी हमने फॉर्मूला वर्क किया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर बॉयल्स लॉ. अब आपसे पूछा व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ इज PV is equal to constant. This is the representation. Why it's representation? Because it is only representing, because constant has no value. Why constant has no value? It's for a given mass. Value देने से तो ये वर्केबल फॉर्मूला बन जाएगा, वो आप हायर लेवल्स में पढ़ोगे. But for the time being हमने वर्केबल बनाने के लिए कांस्टेंट को फिलहाल वापस कर दिया. तो जो एक्सप्रेशन हमारे पास बना था वो बना था P1 V1 is equal to P2 V2. इसमें what P1 stands for initial pressure, initial volume, final pressure P2 and final volume. Okay. Before applying this formula to any working problem, थोड़ा सा एक डिस्कशन करें. Atmospheric pressure. We all know what is pressure. It's force per unit area. What is atmospheric pressure? The pressure exerted by the atmosphere is called what? Atmospheric pressure. What is atmosphere? ये atmosphere है क्या? कहते हैं बहुत सारी डेफिनेशन है, जो सराउंडिंग है, जो एयर मौजूद है सराउंडिंग में, दिस इज एटमॉस्फेयर. बट एक बुक में मैंने रीड की थी डेफिनेशन, मुझे बहुत अच्छी लगी, टू डिफाइन व्हाट एक्चुअली एटमॉस्फेयर इज. कहते हैं वी आर लिविंग at the bottom of deep sea of air.
We are living at the bottom of deep sea of air, and that deep sea of air is called what? Atmosphere. जैसे अल्लाह ताला ने इंसान को रहने के लिए एक पर्टिकुलर किलोमीटर तक एयर रखी है इंसान के लिए इस प्लैनेट अर्थ पे. So for example, this is the surface of Earth. इंसान is actually residing here. तो अल्लाह ताला ने एक रीजन हमारे लिए रखा है इंसान से ऊपर जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं. तो where we are living at the bottom of what? Deep sea of air. And this deep sea of air जिसके bottom में हम reside कर रहे हैं is called what? Atmosphere. And this atmosphere consists of gases and they are exerting pressure on us. ये pressure जो atmosphere हम पे exert कर रहा है, that pressure is actually called atmospheric pressure. तो इस pressure को मैं simply क्या लिख सकता हूँ? Atmospheric, short form लिख रहा हूँ, atmospheric pressure. ये pressure बहुत ज़्यादा है, but हम इसको experience इतना ज़्यादा करते नहीं हैं, ना हम इसको realize करते हैं. क्यों? ये atmospheric pressure, ये जो पूरा air है, ये हम पे एक pressure exert कर रहा है, because according to the definition of atmosphere, we are living at the bottom of deep sea of air, atmosphere. This atmosphere is exerting pressure on us. Why we are not experiencing that pressure? Because Allah की कुदरत, our internal body pressure is same as that of that atmospheric pressure. हमारा अंदर body का pressure same as that of that external atmospheric pressure. दोनों pressure बराबर एक दूसरे को cancel out करते हैं. We are not experiencing it. इस pressure की value कितनी है? एक Dutch physicist था, his name was von Guericke. von Guericke ने एक experiment perform किया था यूरोप में एक जगह पे. It's called Magdeburg. और उस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया von Guericke's Magdeburg's एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट से von Guericke ने बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कितनी ज्यादा वैल्यू है. उसने तो कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे किया, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूं. von Guericke ने क्या किया था, उसने दो मेटल के स्फीयर्स लिए थे ह्यूज. उन मेटल स्फीयर्स को हाफ कट थे, सेमी सर्कल थे, ऐसे like this. ऐसे दो सेमी-सर्कुलर स्फीयर्स लिए like this. और इनको आपस में कंबाइन किया. जब कंबाइन किया, जैसे आप दो ग्लासेस में कंबाइन करें, इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल बराबर होते हैं, अलग कर दिए. अगर आप उनको कंबाइन करें और जितनी अंदर एयर मौजूद है सब सक कर लें, तो उसने भी क्या किया, दोनों मेटालिक स्फीयर्स को कंबाइन किया और वैक्यूम पंप लगा के सारी एयर सक कर ली. कहां से? फ्रॉम इनसाइड. अब उसने दोनों स्फीयर्स को डिटैच करना चाहा, वो डिटैच नहीं हुआ. तो बुक्स में लिखा हुआ है कि 8 हॉर्सेस की टीम ऑन द राइट साइड एंड 8 हॉर्सेस की टीम ऑन द लेफ्ट साइड, कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाए और रिलीज होने तब भी रिलीज नहीं हुए थे. इसका मतलब है अंदर का प्रेशर खत्म कर दो तो सिर्फ कौन सा प्रेशर बच गया बाहर? एटमॉस्फेरिक. और वो इतना ज्यादा है कि वो इन दो स्फीयर्स को सेपरेट नहीं कर सका. अगर हम उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल को देखें, मैंने सोचा हम एक टेट्रा पैक जूस लेके आते हैं. फॉर एग्जांपल कोई भी हम एप्पल जूस लेके आए. अब ऑफ कोर्स पैसे खर्च के जूस तो पिएंगे, हमने पूरा जूस पी लिया. जूस जो लिक्विड था उसकी स्पेस ऑक्यूपाई हो गई किससे? एयर से. एयर का जगह मौजूद है वो उस टेट्रा पैक के अंदर चली गई. इंटरनल एयर प्रेशर और एक्सटर्नल एयर प्रेशर दोनों क्या है? बराबर. बट इफ यू ऑब्जर्व, तुमने जो स्ट्रॉ लगाया था बगैर उस टेट्रा पैक को कंप्रेस किए, तुम सिर्फ एयर सक कर लो स्ट्रॉ से, वो टेट्रा पैक कंप्रेस हो जाएगा. क्यों कंप्रेस हो गया? अंदर का प्रेशर खत्म, सिर्फ कौन सा प्रेशर बच गया? एक्सटर्नल. और वो इतना ज्यादा था कि उसने उस डब्बे को पिचका दिया, कंप्रेस कर दिया. इन द सेम वे हमारा बॉडी का इंटरनल प्रेशर इज सेम एज दैट व्हाट? That atmospheric pressure. That's why हम ये atmospheric pressure feel नहीं करते हैं, because internal pressure और external pressure दोनों क्या हैं? बराबर. अगर नहीं हो अगर internal pressure तो हम भी बिल्कुल वैसे ही compress कर जाएंगे जैसे ये एक डब्बा और जैसे ये दोनों आपस में चिपक गए थे. तो आप प्रैक्टिकली इसको करके देख सकते हो. दो ग्लास लो, उनको आपस में मिला and then suck all the air. They will एक दूसरे से इतनी यानी हम कह सकते हैं attraction इतनी strong होगी, that is only because of what external pressure, and what that pressure is, that is atmospheric pressure. Right? बताने की बात है
एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी है? तो कहते हैं मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि रिकॉर्ड होता है एट द सरफेस ऑफ अर्थ एट सी लेवल वो है 1 एटमॉस्फेयर। तो जो स्टैंडर्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू एक्सपीरियंस होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टैंडर्ड इज 1 एटमॉस्फेयर। बहुत सारे यूनिट से प्रेशर को मेजर करने के लिए इट्स 1 एटमॉस्फेयर। यानी इस वक्त जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। इन अदर यूनिट्स पास्कल इज अनदर यूनिट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसकी वैल्यू है 101.325 पास्कल्स, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1.01 into 10 raised to the power 5 pascals. ये सब बराबर है। 1 atmosphere is equal to 101.325 pascals. Or we can measure this pressure in mm of mercury. It's 760 mm of mercury. Hg. It's a symbol for mercury. From where that symbol Hg comes from? From the Latin name of mercury. It's hydrogynon. उससे Hg आया. Or it's 760 torr. These are different units to measure what? Atmospheric pressure. And at a standard, जो atmospheric pressure हम at the surface of Earth from this atmosphere experience करते हैं, उसकी value 1 atmosphere or it's 101.325 pascals or 360 mm of mercury or 760 torr. हमारे पास ये दो units usually use होते हैं. Which one? 1 atmosphere or 101.325 pascals. So this was a brief introduction about what is atmospheric pressure and what actually atmosphere is. So what is atmosphere? Simple definition to define: we are living at the at the bottom of deep sea of air, and that deep sea of air is called atmosphere. The pressure exerted by the atmosphere is atmospheric pressure. इसका पूरा experiment से मैंने आपको explain किया, and the value standard at the surface of Earth of this atmospheric pressure in different units ऐसे बताते हैं. Now let's come up with one problem जिसको हम Boyle's law P1 V1 is equal to P2 V2 अप्लाई करते हुए। ये सब इसलिए बताया कि इसके अंदर इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम्स के बारे में अगर ये सब वैल्यूज यूज करते हैं तो आप उससे पहले से अवेयर हो ये है क्या। So let's take up with one solution. So the question says, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो P1 V1 is equal to P2 V2 is our working formula. Let's solve one of the problem. ये प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिखी है, अब इसको कैसे सॉल्व करें? What this question says, just read this problem. कह रहे हैं air at pressure of 1.0 into 10 to the power 5 pascals. अब ये 1.0 10 to the power 5 pascals क्या है? आपको इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है. This is standard atmospheric pressure. So कह रहे हैं air जिसका pressure 1.0 10 to the power 5 pascal is contained in a cylinder fitted with a piston. एक cylinder which is fitted with a piston. Piston अब क्या है? जैसे for example this is the cylinder. इस सिलेंडर के अंदर अगर मैं इसको ओपन रखूं तो सारी एयर मौजूद है, एयर मौजूद है, उसका प्रेशर उतना ही जितना एक्सटर्नल सपोर्टेड विद अ पिस्टन। तो इस तरीके से हमारे पास एक इंसुलेटेड पिस्टन होता है, इट कैन मूव अप एंड डाउन। तो ये वॉल्यूम को कंप्रेस भी कर सकते हैं और प्रेशर इंक्रीज भी हो सकता है। ओके, सो कह रहे हैं एयर एट अ प्रेशर ऑफ 1.0 into 10 to the power 5 pascals is contained in a cylinder fitted with piston. अच्छा, इस 1.0 की होगी, छोटी-छोटी चीजें मैं आपको समझाता हूं। If the value is exact 1, तो मैं लिखता हूं 1 into 10 to the power 5. But आप देखो 1.0325 आगे वाले नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, means it's not exact 1. तो 0.0 का मतलब है ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हमारे पास। तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर आपको वैल्यू दी हुई है, तो पॉइंट के बाद जो 0 होता है इट्स सिग्निफिकेंट। तो ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स 1.0। ओके, आगे with piston the air is now compressed by pushing the piston. इस पिस्टन को मैं पुश करता हूं और जो एयर मौजूद है वो कंप्रेस हो रही है। जब मैंने पुश नहीं किया था तो अंदर जो एयर मौजूद थी उसका प्रेशर कितना था? सेम एज दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर ये वैल्यू नहीं भी दी हुई होती, सो ये कांस्टेंट्स मैंने भी लिखे थे, आपको याद होने चाहिए। So that the mass of air now occupies 1/5 of the original volume. मास में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब कंप्रेस होने थे जो आपकी पहले की वॉल्यूम थी उसका 1/5 ऑक्यूपाई करने लगी, 1/5। यानी जो वॉल्यूम थी उसके 5 हिस्से किए, उस 5 में से एक हिस्से को 1/5 कहते हैं। तो यानी वॉल्यूम गेट श्रिंक, यानी प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज।
1/5 the original volume. तो जो original volume थी when it was not compressed, उससे 1/5 रह गया without any change in temperature. सबको पता है Boyle's law apply करते हैं तो temperature change नहीं होता. Calculate pressure of air. So बताइए pressure of air कितना था final, ठीक है ना? यानी अब आपके पास pressure जो final pressure था वो कितना आएगा? Working formula is P1 V1 is equal to P2 V2. So let's write what you were given first. जो भी given है पहले हम उसको लिखते हैं. So given किस तरीके से लिखें? Air at pressure of 1.0 into 10 to the power 5 pascals. This is initial pressure. So हम इसको लिख सकते हैं. हमें सबसे पहले क्या चीज दी हुई है? It's initial pressure, and it's symbolically denoted with P1. And the value is 1.0 into 10 to the power 5 pascals. Pascals is the SI unit of pressure. So no need to convert. तो जो आपको सब solution करना है सबको पता है SI units के अंदर करना होता है. Continuing this referring with the piston, the air is now compressed by pushing the piston. Compress किया piston push करके, so that the same mass of air now occupies 1/5 of the original volume. जो original volume थी, original volume मतलब when it was not compressed, तो वो initial volume हो गई. So हम क्या लिखते हैं? Initial volume is the original volume actually. It's symbolically denoted with V1. But what is its value? It's not given. It's only given initial volume थी V1. और जब आपने pressure exert किया, तो आपके पास जो original volume थी उसका 1/5 volume रह गया. तो आपके पास so that the same mass of air now occupies 1/5. तो आपके पास जो final volume आ गई after compression, it's V2. और ये आपको जिस फॉर्म में दी हुई है वो क्या दी हुई है? The final volume is V2 और V2 की वैल्यू कितनी है? It's 1/5 of what? The original. It's 1/5 V1. At constant temperature, temperature is kept constant. Calculate pressure of air. तो आपको क्या चीज फाइंड करनी है? Final pressure is equal to P2 is equal to question 1. This is required. This is what you are required. Okay? So what you are given, the data says the workable formula is Boyle's law. So let's start with the solution. So we can write a formula. We have, what formula we have? P1. V1 is equal to P2 V2. अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो. From where we get this formula, we can write from Boyle's law simply. Okay, so what is we calculate? It's P2. तो P2 यहाँ रखते हैं, V2 multiply हमारा आगे divide. So it's P2 is equal to P1 V1 upon V2. Now check your data. Is everything given? अगर मैं इसमें substitute करूँ values, P2 is equal to how much P1 was given? 1.0 into 10 to the power 5. V1, it's actually not mentioned, divided by V2. How much V2 is? 1/5 V1, right? फिर हम solve करेंगे. 5 denominator है, ये इधर ऊपर जाएगा, इससे multiply हो जाएगा. P2 would be now 5.0 because it's 10 to the power 5 pascals. So this is your answer. This is how we work with a formula P1 is equal to P2. अच्छा एक चीज और, the graphical representation of Boyle's law वो सिर्फ देखिए. Actually Boyle's law, whenever you are asked to write a mathematical representation of Boyle's law, it's PV is equal to constant. This is mathematical representation, right? This is mathematical representation. If someone asks you to go with a graphical representation, so how to plot a graph? Now, the graphical representation of Boyle's law. Graphical representation of
Boyle's law says PV is equal to constant. Whenever two parameters are multiplied, जो product है, वो product show करके they are inverse relation. And whenever we plot a graph between the two parameters, जो कि inverse relation रखते हैं, so ये PV diagram कहलाता है. It's a PV graph, PV diagram. So अगर मैं PV diagram बनाता हूँ for Boyle's law, so हमें पता है the relation between pressure and volume is inverse. And whenever we plot a graph for inverse relation, it's not a straight line, it's a curve. And the type of curve we get for Boyle's law is this type of curve. This is a hyperbolic curve. It's a hyperbolic curve. If it's like this, it's parabolic. If it's like this, it's hyperbolic. So कहते हैं, what is the graphical representation of Boyle's law? So कहते हैं, the graphical representation of Boyle's law is a hyperbolic curve. A graph between pressure and volume is hyperbolic curve. And can we get a straight line? I'm going to no, because pressure and volume are inversely proportional. But if you are given a question, okay, yes, हमारे पास straight line है graph में, वो कैसे आगे भाई? So उसके लिए आपको एक change करना पड़ेगा. यानी graph अगर ऐसा है आपका, ऐसा है भाई, it's a straight line. तो क्या ये PV graph है? हम कहेंगे no, pressure and volume are what? Inversely proportional to one another. तो वो straight line नहीं बनेगा. But if it's a straight line, तो हम कह सकते हैं it's a graph between pressure and reciprocal of volume. तो अगर pressure और reciprocal of volume के दरमियान हम graph plot करेंगे, it can be a straight line. Though pressure and volume are actually inversely proportional, so it's a hyperbolic curve. So this was actually Boyle's law. So if you look into the past paper question, now you can attempt, inshallah, number of MCQs and number of paper 2 structured questions. So hope this is going to help you out. The next lecture, topic that I'm discuss करते हैं, और उसको work करें. Take care and study well.